Assalamu alaikum. Welcome to lecture 16. In today's lecture, we will discuss some mass fragmentation patterns. This is a very important skill as far as the structure elucidation by mass spec is concerned. So I encourage all of you to perform with me when I'm doing some structural analysis and mass fragmentation mechanisms. So let's start. Uh, Before you even try to interpret mass spectral data, you must know that the ions which are generated in mass spectrometry, they can have odd electron or even electron in their shell. So, for example, a typical molecule, if we represent it with M, then most of organic compound, they have even number of electron in their shell. Uh, so when they are ionized by uh, electron impact, then one electron is knocked off from the molecule and we generate a positive charge species and we put a small dot on it. This small dot indicates that the electron in this molecule are not in even number, they are in odd number electrons. So we call this ion as odd electron system. Okay, so this original species that was even electron. So some ion can become even electron system after losing the free radical or the lone electron. They can become even electron, and they are normally represented with a plus charge without any dot on it, and we call them even electron system. Okay, so before we uh, investigate different mechanisms, we have to realize that what type of ion we are dealing with. What I mean is that you have to identify whether the ion you want to fragment is odd electron or even electron system. Okay, so odd electron ion can have two different pathways in which it can be fragmented into small daughter ions. These two pathways are one electron cleavage pathway and two electron cleavage pathway. In one electron cleavage, one bond is broken in the molecule and two species are generated. One species goes with the free radical with the single dot, and we call it a neutral radical system, and the other fragment that go with the positive charge. So that is our even electron system. So you can see that the odd electron starting uh, charged species that was fragmented by breaking one bond into even electron system and a neutral ion, ion species. So of course, positive charge species will be the one which will be detected by mass spectrometer. The neutral ion will be lost in this analysis. Uh, Odd electron system can also fragment by two bond cleavage. Whenever this mechanism happen, the two species will be formed and one will be neutral molecule. You can see that it does not have any positive charge or any single electron
drawn on it. So it is a neutral molecule, which can be simple organic molecule, or water, or carbon dioxide, or other type of small molecule. The second fragment that contain both positive charge as well as the single electron. So this is again the odd electron system. So odd electron system, when eliminate a molecule, it will generate another odd electron system. So odd electron can again have two fate. For example, this ion can undergo one bond breakage, uh, one bond cleavage, or it can still undergo two bond cleavage. So it has again availability of two pathways, whereas the even electron ion, which is originally formed or when it is generated in the fragmentation mechanism, that will always have only one way to go. And that is when when a neutral molecule is eliminated, and we have even electron system back. So even electron system will generate even electron system and nothing else, and a neutral molecule will be eliminated. Whereas odd electron can generate not only the even electron system, but it can also generate the odd electron system. That is very important distinction between two type of ions which are generated in mass spectrometry. As a rule of thumb, if your molecule does not have nitrogen in it, then all odd electron system, they will show even mass. Odd electron system will show even mass, and even electron system they will show odd mass. So by looking at the mass spectrum and we can see if the fragment have a odd mass or even mass, we can correlate back what type of electron system they will have. So even mass will show odd electron system, and odd mass will show even electron system. And that is applicable only when there is no nitrogen in your molecule. Okay, so now we start the mechanisms by which ions are fragmented in mass spectrometry. And again, I cannot over emphasize this skill. Everyone should practice this skill a lot to master this spectroscopy technique. So first mechanism is the radical site uh, uh, controlled alpha cleavage. So what does this mean? This means that we have a radical cation, which the charged species which have a charge as well as a single electron. So the single electron will control this mechanism. So to draw this fragmentation, you have to identify the site of ionization. So in this general molecule, Y is the site of ionization. And the next atom to the ionization site is called alpha atom, and the next to alpha is beta atom. So in this ionization, which is very common,
in this ionization, in this cleavage, the bond next to alpha atom is broken. So this is alpha. So this bond, which is between alpha and beta, that will break as a result of alpha cleavage. This fragmentation pattern is so common that it will occur not only in saturated and unsaturated bond, but it will also be taking place whether your molecule have the heteroatom or not. So practically in almost all type of molecule. So let's start how we can do this cleavage. So I will redraw this molecule. So this is the site of ionization, and you must recall that the site of ionization depend on the electron energy. And in the previous lecture, I told you that if your molecule have a heteroatom with a lone pair, then that will be the site of ionization. Okay, so positive charge is created here, and we identify the alpha and beta atoms, and now start a single-headed arrow from the free radical side. So this single electron, and drop the head on the atom, on the bond which is between alpha atom and the site of ionization. And now take the bond between alpha and beta, and we know that this bond is actually nothing other than two electrons sitting there. So one of the electron must meet with the electron which we have dropped on single line here, and the remaining one electron that will sit on the beta atom. And that's it. We are done with this cleavage. You have to draw three single-headed arrows, and starting from free radical, and uh, taking the the bonded pair between alpha and beta bond. Now see very carefully where the arrow heads are meeting. We will make additional bond, and where tails are meeting, we will cleave that bond. So this is the cleavage site where tails are meeting, and this is the additional bond site where two heads are meeting. So we redraw this molecule uh, with an with these changes. So this electron is consumed making a bond, so only positive charge will be shown, and this is your old bond, and here we have the additional bond which is formed because of this movement, and this bond is broken, so we will not draw anything after this bond, and the remaining fragment have the free radical on it, and then we draw the rest of the molecule. So these two fragments will be generated as a alpha cleavage, and of course this free radical will be lost, and this ion will show at M over Z, which is corresponding to this number of atoms and types of atom. Okay, let's look at another example. Let's say we have this molecule which have lone pair on oxygen, and when this molecule get ionization, then charge will created on oxygen. This is the site of charge, and now we locate the alpha atoms, beta atom. So site of ionization is oxygen, so this carbon become alpha, and then this carbon is beta. Okay, so free radical will start its journey, and you drop it right on the existing bond, and now out of two electron between alpha and beta, you take one electron and combine it with the first arrow and the
third arrow you will put on the beta atom. And then we will have fragmentation. The tails will be the site where the bond will break. So beta atom is here, that will have a free radical. Other fragment will have a oxygen with a triple bond. Two bonds was already present, and third bond is formed when the free radical was moved in this cleavage pathway. Uh, and positive charge will stay on oxygen because positive charge did not take part in this mechanism. So M over Z will appear for this ion. Okay. All right. So let's look at some other examples of this mechanism. So here is this is ion which have odd electron. Again, electron will start this alpha cleavage. You move toward the alpha atom, and the electron, one of the electron from alpha beta bond will meet here, and the other one go on by, and then we generate these two species. This species will be lost, and this positive charge species will be appearing in the mass pack. And this is the ion which is similar to ketone, which we have tried previously. By replacing oxygen with Y, you have the same situation. So here alkene can be ionized at the double bond. So double bond, after losing one electron, will get a positive charge and a single electron. So single electron will move toward the alpha atom, and bond between alpha and beta will broken to give this fragmentation. Right. So let's look another example of alkyne where we have the site of ionization is the double bond. After ionization, one electron will be lost, and we create a positive charge on its place, and then free radical move toward the alpha atom, and the bond between alpha and beta is broken to make these two fragments. One fragment is neutral and it will be lost, and other fragment is positively charged that will appear at mass M over Z of 41. Okay, last example one, pentanol. So normally molecules are given in this way. You have to very carefully draw the free radical, the lone pair on oxygen, and identify the site of ionization. And of course, that will be the OH. Uh, the oxygen free radical will move toward the alpha atom, and the bond between alpha and beta that will get broken, and we will make two ions. One will appear at M over Z 31, and other one will be lost because it does not carry any positive charge or negative charge. Okay, so that is the first mechanism, very common mechanism, which is called alpha cleavage. And I expect all of you will practice with different type of functional groups, and uh, just draw three arrows starting from the lone pair of starting from the single electron, and move it toward the alpha atom, bring the alpha beta bond, and then make two fragments. Positive charge will stay with the original site of ionization, whereas the other fragment will be lost as a free radical. Okay, the second type of mechanism is inductive cleavage, and that is derived by the charge. Alpha cleavage is derived by single electron, and inductive cleavage is derived by
positive charge. And the driving force is the presence of a positive charge on the electronegative atom. So if atom is electronegative like oxygen, nitrogen, halogens, then creation of positive charge will not make them happy, and they will try to pull electron from the adjacent bond toward itself. By doing that, they will put the positive charge on the fragment from where they have pulled electron, and they themselves become neutral by this pathway. So we can see some examples here. Let's draw the structure of propyl ethyl ether. So oxygen with two lone pair of electron will get the charge after they are bombarded with electrons, and now the adjacent bond, either from this side or from this side, they will move toward the positive charge. And just note that this time we are drawing the full head arrow. Because now both electron pair in this bond, they are moving together and they rest on oxygen. And the bond which you have moved will cause the bond breakage, and this site which is losing the electron, that will get positive charge, and oxygen after getting this lone pair will become neutral species. So this species will be lost, and M over Z for this ion will appear in mass spectrum. Okay, let's look at another example. This time I just want to draw a little complicated example. Okay, now since positive charge is on oxygen, it can give the inductive cleavage. And now remember that here when the atom was pulling electron, there was only the sigma bond which were available. But now we have both sigma and pi bond between oxygen and carbon. So when you uh, pull the electron from the adjacent bond and place them on the positive charge, they will go uh, from the pi electron, from the double bond. And since no breakage has taken place with this mechanism, we will draw another structure uh, where the positive charge has moved to the carbon, because when you have moved this electron pair, the positive charge showed up at this end. Oxygen become neutral. And now one of the bond which are adjacent to this positive charge, they will move toward this positive charge. So we can have a uh, ion with the positive charge on the benzene ring, and M over Z at 77 will show up. Or if you move the electron from this side, not from this side, then we can uh, have another fragment, but with a slightly different M over Z, and that will be CH3 with a positive charge. Because जब आपने electron ये वाले move किए, the charge will end up here at this carbon. Okay, so CH3 with M over Z is equal to 15 will be the ion which will show up in mass spectrometry. Okay, all right, so let's look at the other example. Yes,
सो यहाँ 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जब ये इंडक्टिव क्लीवेज टेक प्लेस करती है, then we can end up with 2 type of fragment. That fragment could be a radical, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा या इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि one fragment contain one electron and other is of course the charge uh, species, and it can be a closed shell neutral molecule. उसकी हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो YH2 बिकम ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इसी तरीके से ये एल्कीन भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि पहली 2 एग्जांपल में दीज आर न्यूट्रल रेडिकल. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि पहली एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके पास जो सिस्टम है दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आप इस स्पीशी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव स्पीशी आपको नज़र आ रही हैं दोनों, आप यू कैन सी दैम. लेकिन जो नीचे 2 आयन हैं दीज आर इवन इलेक्ट्रॉन. सो आपने देखा कि जो इवन इलेक्ट्रॉन जब फ्रैगमेंट होता है तो उसमें मॉलिक्यूल एग्जिट करते हैं, और जब ऑड इलेक्ट्रॉन फ्रैगमेंट होता है बाय इंडक्टिव क्लीवेज तो उसमें न्यूट्रल रेडिकल एलिमिनेट होते हैं, एंड इन ऑल दीज एग्जांपल्स यू विल गेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर फ्रैगमेंट. ओके, चलें यहाँ पे एक और एग्जांपल को हम देखते हैं इंडक्टिव क्लीवेज की. Let us draw a molecule which is ester, and we have now 2 oxygens. We have plenty of pi electrons. Since non-bonding electron they are higher in energy, we can assume the site of ionization is one of the oxygen, but it can be benzene ring as well. Okay, so since many places can get ionization, we assume the ionization has taken place at the ester oxygen. Now you can draw the inductive cleavage by moving the electron from the right side or moving the electron from the left side. In both cases, the fragmentation will give rise to different type of M over Z. So in the first pathway, we will get a positive charge at this place, and M over Z of this fragment will appear, and the other part will be lost as a neutral ion. Whereas if you move the electron from the right side, then the fragment M over Z where the positive charge on carbon will appear, and the acetate, the benzoate free radical will be lost as a neutral radical. Okay. So I hope you understand this inductive cleavage. Please don't hesitate to ask question if you don't understand this mechanism. Okay, let's move to the third mechanism. So in third mechanism, we have 2 bond cleavage, and whenever 2 bond cleavage take place, a neutral molecule is eliminated, or even electron closed shell neutral molecule will be eliminated. When I say even electron closed shell,
That means the normal molecule like H2O, like alkene, like complex substituted alkene, like carbon monoxide, like carbon dioxide. So these are small molecules which have a closed shell electron, and they will be eliminated uh, from this species. Okay. So for two bond cleavage, the mechanism, the arrow pushing is a little bit complicated, but if you are with me and practicing with me like I am trying, it should not be a problematic. So first of all, identify what type of molecule will give rise to two bond cleavage. Most prominent are alcohols, alkyl halides, and cyclic structure like cyclopropane, cycloalkane, cycloalkenes, and of course aromatic compound. Uh, because in cyclic structure, you cannot break any fragment unless you break the bond at two different places. Okay, so in the alcohol and halide, the mechanism is identical. Site of ionization will always be the heteroatom, and one of the hydrogen, it can be from the adjacent carbon, it can be as many carbon away as you can. So any hydrogen which is on beta, gamma, delta, whatever position you like, this oxygen, this hydrogen will make a bond with the heteroatom. Uh, for oxygen, for example, it will make water, and for halogen, it will make hydro uh, chloric acid if it is a chlorine, or hydrobromic acid if it is a bromine. So these that will be these neutral molecule that will be eliminated. Okay, the electron, the remaining electron from these two species, from halogen and from hydrogen, they will recombine to give the cyclic structure like shown here. In case of cyclic structure, ionization will take place from sigma bond, and then free radical will move toward to the next bond, and we can see some glimpse of alpha cleavage in this case. For example, this arrow 1, दिस एरो 2, दिस एरो 3, अगर आप ये फ्री रेडिकल की साइड है, इसको अगर आप अल्फा कह लें, इसको बीटा कह लें, तो ये जो पहले 3 एरो हैं, दैट लुक लाइक अल्फा क्लीवेज। तो अल्फा क्लीवेज में और टू बॉन्ड क्लीवेज में फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक फोर्थ एरो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से आके तो दो जगह से बॉन्ड को ब्रेक करता है. सो वन साइड फ्रॉम हियर एंड अदर साइड फ्रॉम हियर, एंड देन we will have a alkene bond which is eliminated from this molecule. ओके, चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है. सो पहले हम अल्कोहल से ट्राई करते हैं. सो आप OH यहाँ पे अल्कोहल का ड्रा कर लिया with a positive charge and free radical. अब मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करता हूँ कि जो हाइड्रोजन है, let's say this hydrogen, that become closer to this OH group. And then we have any R groups here, or 2 group here, somewhere. Okay. अब आपने क्या करना है कि या तो आप सिंपली यहाँ से 4 एरो खींचें हाइड्रोजन से और OH से, like this way, like this. So H और OH में से एक इलेक्ट्रॉन आपका OH का, एक H का, ये आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको HOH बॉन्ड आप कह के, which is H2O, which is a neutral molecule. और इसके बाद ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड के हैं, they will recombine
to give the cyclic type of structure. अब इसमें चूंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आपने इसको ब्रैकेट डाल के तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव उसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन बुक की कीपिंग रखते हैं तो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर फ्रैगमेंट्स। अब आपने अगर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लिया है विच डज नॉट हैव free radical, which does not have a radical, a cation. So both of these species will be showing up in the other fragment. So आप यहाँ में नहीं अगर रखेंगे तो they will end up here. ओके कुछ लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था और अक्सर दैट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन कि जब आप यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला रहे हैं तो चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल तो ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है, व्हाई दे एंड अप इन दिस साइड, दे शुड एंड अप एट समवेयर हियर। तो उसके लिए ये है कि मैं इस मैकेनिज्म को स्लाइटली मॉडिफाई करता हूँ। वो इस तरीके से कि आप जब आयोनाइजेशन हो चुकी होगी आपके मॉलिक्यूल की, तो आप एज्यूम कर लें कि आपके ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज स्विच्ड बाय द बाय द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दोनों आपस में स्विच करते हैं। ओके जब आप इसको स्विच कर देंगे तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल और फिर इसके बाद ऑक्सीजन और OH आ गया। अब ये एक पार्शियल बॉन्ड है, इट इज नॉट द यू नो ए ब्रोकन थिंग, इट इज ए सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ पे हाइड्रोजन है विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बाकी आप स्पीशीज ड्रा कर रहे हैं। नाउ it is very easy to see that this free radical is combining with this free radical and this positive charge is combining with this free radical to give HOH has one species and free radical यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस एंड पे आपके पास रेडिकल है। सो ये आपस में मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, पार्शियल बॉन्ड। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि आप पूरा एक सर्कल बना लें और उस सर्कल में आप ब्रैकेट ड्रा करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल ड्रा कर दें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। ओके The fourth mechanism is retro-Diels-Alder fragmentation, और इसकी पहचान है, this mechanism will not take place in every molecule. It will only take place in a molecule which have a 6-membered ring with a double bond in between. Okay, so अगर आप मॉलिक्यूल में ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, they will fragment by retro-Diels-Alder mechanism. Okay, otherwise they will not fragment by this mechanism. Okay, so इसका mechanism कैसे ड्रा करना है कि you always start from the pi bond और single and added arrow के साथ आप next bond की तरफ move करते हैं दोनों साइड से, and the neighboring electron will move toward it to complete the 6-member transition state. तो आपने ओवरऑल इसमें 6 एरो ड्रा करने हैं और 6 एरो में आप देखेंगे किसी जगह पे उनके हेड आपस में मीट कर रहे हैं। जहाँ पे हेड मीट कर रहे हैं वहाँ पे एडिशनल बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे टेल मीट कर रही है वहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और इवेंचुअली वी विल एंड अप with a species like this. So that is the retro-Diels-Alder mechanism. इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है
कि जो आपकी अल्कीन है, जो सिंगल बॉन्ड है, दैट विल बी योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और जो आपकी डाईइन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, that will fragment with radical and free radical and cation together. So of course this will be the part which will show up in mass spectrometry. अब इसमें भी आप देखें कि 2 bonds are breaking and elimination is taking place. So 2 bond breakage and elimination जिस तरह थर्ड मैकेनिज्म में था, और आपने देखा कि इसके अंदर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और रेडिकल जो एनाइन है वो दूसरी स्पीशीज पे मूव करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक मॉलिक्यूल नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें एक साइक्लोहेक्सीन रिंग है और एक डबल बॉन्ड आउटसाइड पे है। सो इसकी जब फ्रेगमेंटेशन होगी, रेट्रोडील एल्डर इसमें वेरी वैलिड मैकेनिज्म है फ्रेगमेंटेशन का। तो उसमें जब फ्रेगमेंटेशन होगी सो डाईइन जो है आपकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगी, और अल्कीन जो है coincidentally both of these fragments look identical because आपका मॉलिक्यूल एग्जैक्टली हाफ में यहाँ से कट ऑफ होता है, जिससे वो आइडेंटिकल पेयर जो है ना इसके अंदर से बनते हैं। But of course one of them is the double bond and other one is diene, and diene will take the positive charge and the double bond will stay as a neutral molecule. So इसका जो फ्रेगमेंट है दैट अपीयर एट 68। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो 68 पे एक लंबी टॉल पीक अपीयर होती है, और आपको पता है कि जो टॉल पीक होती है दैट इज कॉल्ड बेस पीक। सो इस मॉलिक्यूल की जो बेस पीक है दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डील-ज़ेल्डर रेट्रो-डील-ज़ेल्डर फ्रेगमेंटेशन। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के भी आते हैं कि यू आर गिवन ए स्पेक्ट्रम and you are asked to identify the base peak, and then you are asked that on by which mechanism this base peak has been formed. So उस सूरत में आपने मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके तो आपने उसमें अल्फा क्लीवेज ट्राई करें, उसमें इंडक्टिव क्लीवेज ट्राई करें, उसमें 2 बॉन्ड क्लीवेज ट्राई करें, उसमें रेट्रो डील-ज़ेल्डर ट्राई करें, और उसके बाद जो बाकी मैकेनिज्म है वो भी आप ट्राई करेंगे। तो इवेंचुअली वन ऑफ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न विल गिव यू द रिक्वायर्ड पीक। Okay. Now the fifth mechanism is Mac-Lafferty rearrangement. Mac-Lafferty rearrangement के लिए एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। वो स्पेसिफिकेशन ये है कि you should have a hydrogen atom at the gamma position of the site of ionization. साइट ऑफ आयोनाइजेशन हर मॉलिक्यूल में नहीं बल्कि एरोमेटिक रिंग की साइट ऑफ आयोनाइजेशन, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कीन और इवन ईथर, इसके जो गैमा पोजीशन है उस पे हाइड्रोजन अगर मौजूद है देन दिस रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। और ये जिस तरह हमने अल्कोहल में 2 बॉन्ड एलिमिनेशन ऑब्जर्व की थी, ये उसी तरह की ही एक एलिमिनेशन है, लेकिन ये गैमा हाइड्रोजन को फोकस करती है। जबकि जो 2 बॉन्ड क्लीवेज है वो आप अल्फा पे भी कर सकते हैं, बीटा पे भी कर सकते हैं, और डेल्टा, गैमा। सो रिमेंबर जब आप गैमा पे करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव तो दैट विल बी द मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है। आपने गैमा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है। लेट मी ड्रॉ द मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स। सो ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है, तो उसके बाद अगर आप ये अल्फा कार्बन ड्रा करते हैं, फिर आप उसके बाद बीटा कार्बन ड्रा करते हैं, फिर गैमा कार्बन ड्रा करते हैं। अगर इस गैमा पे हाइड्रोजन मौजूद है then this hydrogen is very close to the site of ionization. अगर site of ionization आपकी aromatic ring है
तो फिर इसमें आपके पास वही 2 बॉन्ड एलिमिनेशन होगी। लेट्स अज्यूम के वन ऑफ डबल बॉन्ड इज आयोनाइज्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा टुवर्ड द हाइड्रोजन, देन दिस द रिमेनिंग जो इसमें फ्रेगमेंटेशन है वो इस तरीके से अगर आप चलाएं तो you will end up with the 6 membered transition state, और इसके बाद these two double bond remain intact। यहाँ एक पहले हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल ने गैमा पोजीशन से एक्वायर किया है, and then we have one bond at the alpha, and the additional bond is formed when positive charge and one of the electron from alpha beta has moved at this position। So जब आप ये ड्रा कर लें तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल ड्रा कर सकते हैं। एंड इसके अंदर चूंकि मॉलिक्यूल एक अल्कीन की फॉर्म में एलिमिनेट हुआ है एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, therefore the original positive charge and original radical, they will stay with one of the fragment where m over c will be appearing। ओके, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स से लाइक दिस वन, तो उसमें भी अल्फा कार्बन, बेटा कार्बन, गैमा कार्बन, एंड देन वी हैव अल्फा, बेटा एंड गैमा, एंड इफ वी हैव हाइड्रोजन और यहाँ पे साइट ऑफ आयोनाइजेशन, you can see that this hydrogen reach very close to the site of ionization, and that cause the rearrangement of this hydrogen from gamma position to the site of ionization, and then the rest of the mechanism will take place in the same way, and we will have again the elimination of CH2 double bond with m over z, oh sorry, mass mass of 28, and the rest part of the molecule will give the m over z, because यहाँ पे कोई z नहीं, कोई charge नहीं है, so we cannot say that this is m over z। Okay, for alkene we can have the similar type of situation, alpha, beta and gamma। So gamma hydrogen is very close to site of ionization, it will rearrange, it will move from gamma position to the site of ionization, and then it will cause the beta gamma atoms to be eliminated as a neutral molecule। All right, so let me clear the clutter। So here we have alkene, जिसमें site of ionization आपका double bond है, आपने इसको rearrange किया in a very nice way so that the hydrogen go very close to the site of ionization, and then we move uh, the arrows from radical, and alpha beta bond will be broken, beta gamma bond will be eliminated as a alkene, and then hydrogen from gamma that will move to the site of positive charge, and then we will have m over z42 for this fragment। McLafferty can be shown in benzene ring, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। सो अगर आप इसको अल्फा, बीटा और गैमा के साथ लेबल करें तो गैमा हाइड्रोजन go very close to the site of ionization, जो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में है, and we will have a peak at 92 where the radical and ion together and one alkene will be lost। Okay, the last very important fragmentation is called tropylium ion formation। ट्रोपिलियम आयन वहाँ बनती है जब एरोमेटिक रिंग के साथ कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है। कोई भी एरोमेटिक रिंग है उसके साथ अगर मेथल लगा हुआ है या इथाइल ग्रुप लगा हुआ है या आइसोप्रोपाइल, जो भी ग्रुप लगा हुआ है, then they will convert to 7-membered ring through a rearrangement mechanism which is not part of this course। आपने सिर्फ इतना समझना है कि जो भी अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे आयोनाइजेशन बेंजीलिक पोजीशन पे होगी, बिकॉज बेंजीलिक पोजीशन
is the most stable carbocation. So the charge will be created at this position, and then one of the bond in the 6-membered ring will be broken, and it will expand to 7-membered ring, and it is still aromatic because 6 pi electron, although there are 7 members, but 6 pi electron, that is a pretty much aromatic system, and that is one of the stable ion in mass spectrometry. So uh, as soon as stropylium ion is formed, it becomes stable, and most of the time they give rise to the base peak in the such molecule. ओके, अब ट्रोपिलियम आयन इज नॉट दैट मच स्टेबल के ये फ्रैगमेंट नहीं होता। ऑफ कोर्स ये भी फ्रैगमेंट होगा, और इसकी फ्रैगमेंटेशन भी बड़ी यूनिक है। सिंस इट इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। जब भी 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसमें एलिमिनेट होगा और चार्ज आपके पास दूसरे फ्रैगमेंट पे जाएगा। अब आपने यहाँ पे ये देखना कि इट इज़ इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल आपको नज़र नहीं आ रहा। रेडिकल जो है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में शुरू में ही एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद ये सारा जो ट्रोपिलियम आयन है दैट इज़ इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको पता है कि ओनली गिव राइज टू वन पाथवे जिसमें ये इवन इलेक्ट्रॉन ही जनरेट करता है। जब अगर इवन से इवन को आप जनरेट करेंगे, you can eliminate only the neutral molecule from it. So ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस तरह निकलता है जैसे आपने एलिमिनेशन मैकेनिज्म जो मैकेनिज्म 3 है उसमें देखा था। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से इसके साथ आके कंबाइन करें, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन करें, तो आपका बॉन्ड जो मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 2 बॉन्ड पहले से थे, थर्ड बॉन्ड यहाँ पे बना, तो एसिटिलीन विद मास ऑफ 26 दैट विल बी लॉस्ट। तो अगर आप ट्रोपिलियम आयन फॉर एग्जांपल 91 पे अपीयर होता है बेंजाइल का, तो उसमें 65 पे आपको पीक नज़र आएगी बाय द लॉस ऑफ 26। सो 26 का लॉस आप ज़हन में रखिएगा, दैट इज़ कमिंग दैट कम फ्रॉम एसिटिलीन द अल्काइन। अब इसमें भी ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें भी यही मैकेनिज्म इसी तरीके का दोबारा फिर एक्ट कर सकता है, जिसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो सिंगल बॉन्ड है ये आपस में कंबाइन करके एसिटिलीन इसमें से बना लेंगे, 26 का लॉस हो जाएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन करके तो एक अदर स्मॉल फ्रैगमेंट बनाएंगे जो 39 पे, या अगर इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 53 पे अपीयर होगा। सो ट्रोपिलियम आयन में जब भी फ्रैगमेंटेशन होगी तो उसमें 26 का लॉस होगा एट एवरी स्टेज, एंड यू कैन इमेजिन कि उसमें जब भी 26 का लॉस हो रहा है तो उसमें एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट कर रहा है। Okay, guys, that's it for the mechanisms of fragmentation. कुछ मॉलिक्यूल हम देखेंगे जिनके कुछ एडिशनल मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन वो जैसे ये कोर्स अब आगे चलेगा तो उसके साथ साथ हम उसको कंबाइन करते रहेंगे, लेकिन आपकी जो स्किल बुक है उसके अंदर ये 6 मैकेनिज्म लाजमी होने चाहिए। आप कोई भी मॉलिक्यूल पकड़ें, उसको अल्फा क्लीवेज उसके ऊपर अप्लाई करें, उसके ऊपर इंडक्टिव क्लीवेज करें, अगर देखें 2 बॉन्ड से उसके अंदर फ्रैगमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता, उसमें देखें कि रेट्रोडील एल्डर अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर उसके बाद मैक्लेफर्टी गामा हाइड्रोजन आप देखें कि गामा हाइड्रोजन है, तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकता है, स्पेशली अगर एरोमेटिक रिंग है या कार्बोनिल है। कार्बोनिल में एस्टर, अमाइड, ये सारे जो फैमिली है वो सारी आ जाती है। उसके बाद अल्कीन में और उसके बाद अल्काइन में भी ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकती है।
और आखिरी मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा है वो ट्रोपिलियमाइन है। ये अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, देयर इज नो कार्बन इन दैट, तो इसमें ट्रोपिलियमाइन नहीं बनेगा। ओके, तो ट्रोपिलियमाइन के लिए ज़रूरी है कि बेंजीन रिंग के साथ एक एडिशनल कार्बन अटैच हो, so that 7-membered ring is formed, and we must have a aromatic system with 6 pi electron delocalized over the whole ring. Okay, thank you very much for your time, and if you still have any question, don't hesitate to ask me or drop me email, and I will be happy to answer them. Thank you very much. Allah Hafiz.